Now notice that there are a lot of exceptions when we are moving from metric spaces to topological spaces. I mean, those topological spaces which are generated by metric, as well as there are topological spaces which may or may not be generated from the metric. And we already know how to generate topology by metric. With the help of metric, we will construct open balls, and by taking the collection union of open balls, we will get open set, and then again collection of all such open set is going to generate topology called topology generated by the metric, by the given metric. Okay, na? But there are metric which need not be generated from the there are topological spaces which need not be generated from the metric space. Like you can take indiscrete topology. There is no metric which is going to generate the indiscrete topology. Okay. So first of all, let us one by one notice all such exceptional point. And if you recall, then in metric spaces lectures we have studied that all finite sets are closed. All finite sets are closed. But in topological spaces, it need not be true. Am I audible to everyone? Yes, sir. But in topological space, a finite set need not be closed. For example, if you look at this set, let me take this set x equal to a, b, c, and let us take this topology on this set. This topology is denoted by phi. Phi and x is already there in every topological space. Now look at the open sets A, B, B, and BC. One can check that this is going to form topology. But here you can see that singleton B, being a finite set, is not closed here. Why? Because complement of B in ABC is AC, and AC is this set is not member of the topology. And we know that only members of topology are called as open set. So since its complement is not open, so B is not closed. है ना? पहला आपको एक्सेप्शन बताया. इस वजह से जब भी आप मैट्रिक्स से टोपोलॉजी में आए तो एक्सेप्शनल पॉइंट को जरूर नोटिस करें, है ना? Actually, now question is what condition we put on which type of topological space it is always guaranteed that finite sets are closed. So we will, if your topological space is Hausdorff, then we will notice that in that case, I mean, finite sets are always closed. But if your topological spaces are not Hausdorff, then finite set may be closed, may not be closed. ठीक है ना? अगर टोपोलॉजिकल स्पेसेस हाउसडॉर्फ नहीं है, हाउसडॉर्फ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, हाउसडॉर्फ ने ऑलरेडी पिछले पढ़ा चुका हूं. So you can see here that this space is not Hausdorff. For example, let me take B not equal to C. Let me take B not. Now, can you tell me the open sets containing B? A, B, 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 C, and X. So open sets containing B are A, B, singleton B, B, C, and X itself. And open set containing C, open sets containing C are X is already there, full space is already there, and BC. So in all cases, you can see that we don't have disjoint intersection. I mean, there are no open sets containing B and no open set containing C which are disjoint. Is it clear to everyone? So this space is not Hausdorff. Yes. So if your space is not Hausdorff, then it may happen that finite set may be closed or need not be. But if your topological space is Hausdorff, then finite sets are always closed. So similar type of exceptions we will see in convergence. Actually today in this lecture, I want to mainly focus on convergence of sequences in topological spaces. So how we will look at convergence of sequences in topological space. So for that, this is what written here. If you study, you will find all those things which I have mentioned here. Now look at this one. First of all, read this. Similarly, one's experience with the properties of convergent sequences in R and R2 can be misleading when one deals with more general topological spaces. In an arbitrary topological space, says this one is the definition of sequence, convergence of a sequence. In an arbitrary topological space, one says that a sequence x1, x2 of points of the space X converges to the point X of X
of topological space X provided that corresponding to each neighborhood U containing X. And if we are claiming that Xn is converging to X, then whatever open neighborhood we will choose containing X, for each open neighborhood there exists some natural number n naught or say n, such that Xn belongs to this open neighborhood for all n greater than equal to n. ठीक है, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस. क्योंकि टोपोलॉजी है दे रखी तो ओपन सेट्स अवेलेबल होंगे. सो इफ वी आर क्लेमिंग दैट X is its limit, then we need to look at it should be true for each neighborhood. So to discard that Xn is not converging to X, think of at least one open set for which we don't have such n satisfying this condition that Xn belongs to U for all n greater than equal to n. ठीक है ना, तो ये है. So till now we have studied R and R2. Actually on R and R2 here topology is not given. This means they are talking with respect to standard topology. And if you notice, then standard topology generated by standard metric, and both R and R2 standard topology are Hausdorff, because in R whenever you will consider two real numbers, say 1 and 2, so I can always make cuts like this, open set basis members whose intersection is disjoint. Similarly in R2 you can do this. There you can choose open disks or union of open disks around around two distinct real numbers, around two distinct pairs, such that their intersection is disjoint. But in arbitrary topological spaces, so if you notice, then R and R2 are basically Hausdorff spaces. But what will happen that in general in arbitrary, if I change the topology even on R and R2, I will explain with the help of examples that by changing the topology, because see topology is defined in terms of open set, and by changing topology we have different open set, and this definition is totally depending on this neighborhood. Actually in Munch's neighborhood is used for open set, है ना, अरे पहले पीछे बता चुका हूँ, ठीक है. So what will happen that the sequence here one example is discussed here, that by setting Xn equal to B for all n converges not only to the point B but also to the point A. So it may happen in topology that a sequence may converge to even more than one limit, even it may converge to every member of the sequence, है ना. जैसे बहुत फेवरेट एग्जांपल है, अभी आप पढ़ के आए हो, सीक्वेंस 1 by n converges to 0 in R with respect to standard topology. But same sequence 1 by n will not be convergent to any real number if I replace standard topology on R with discrete topology. And same sequence 1 by n will converge to every real number if I replace topology on R by indiscrete topology. तो देखो सीक्वेंस सेम है, लेकिन टोपोलॉजी चेंज करने से हो सकता है that may converge, that may not be converge, or that may converge to more than one limit. ठीक है. And we already have seen that basically R with this indiscrete topology is not Hausdorff, है ना. तो उन सारे पॉइंट्स को मैं रिकॉल करा रहा हूँ यहाँ पे. पहले मैं आपको बता दूं कि क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, और फिर एक एक करके उन सारे रिजल्ट्स को देखेंगे. तो अब सीक्वेंसेस जो होंगे, सीक्वेंस में बी ऑफ सच टाइप इन विच एवरी टर्म इज डिस्टिंक्ट. It may be of eventually constant sequence type. It may be of suppose some of the terms are getting repeated. Say in R, if you consider Xn equal to -1 to the power n, in which -1 and 1 gets repeated infinite times, है ना. तो इन अलग अलग तरह के सीक्वेंस को we will observe their behavior in different topological spaces, their convergence behavior in different topological spaces, whether they are converging or not. Sequence 1 by n ले लो, -1 to the power n, फिर छोटे छोटे सीक्वेंसेस लेके पहले सीखो चीजें, और जब एक बार आपको आइडिया हो जाए, सो इन जनरल यू कैन एक्सटेंड ऑल दोस रिजल्ट्स. ठीक है. या आपको कोई ऐसा दे दिया जाए सीक्वेंस इन विच टर्म्स आर रिपीटेड, है ना. तो एक एक करके देखते हैं. Now here you can see that in this example, also let me explain this example. Here it is written that if I set the sequence, अच्छा sequence section होता क्या, मैपिंग from where to where. अच्छा sequence of real number क्या होता है, पहले आप ये बताओ. Sequence of real, sequence क्या होती है? Sequence is a function from set of natural number to रियल नंबर. अगर आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात करोगे तो मैपिंग फ्रॉम इन टू रियल,
in arbitrary topological space you need to replace this r by x, है ना, सीक्वेंस इन टोपोलॉजिकल स्पेस फ्रॉम n टू टोपोलॉजिकल स्पेस x पे जो भी टोपोलॉजी दे रखी हो तो ये उसी को एक्सटेंड कर दिया इन टोपोलॉजिकल स्पेस, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर n टू c, सीक्वेंस ऑफ इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस n टू x, ठीक है। सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन इन टोपोलॉजिकल स्पेस फ्रॉम n to x. Now here claim is that this xn equal to b for all n converges not only to the point b but also to point a. Actually ये इसमें बात कर रहे हैं, ये जो है ना ये टोपोलॉजी है, मान लो x equal to a b c ले लो and let us take this topology. So with respect to this topology, if I choose this sequence xn equal to b for all n, मतलब x1 की वैल्यू भी b होगी, x2 की वैल्यू भी b होगी, x3 की वैल्यू भी b होगी। देखो मैं यहाँ पे ऐसे समझो कि ये जो xn है एक्चुअली आप ये जो लिख रहे हो ना x1 x2 x3 एंड सो ऑन सीक्वेंस के मेंबर, x1 की वैल्यू भी b है, x2 की वैल्यू भी b है, x3 की वैल्यू भी b है। सो this constant sequence is going to converge not only to b but it is also going to converge to c. Basically we need to prove that this sequence xn equal to b not only to the point b but also to the point a and to the point c. This sequence is going to converge to all the points a b and c. ये सीक्वेंस xn जो है ये a को भी कन्वर्ज करेगा, b को भी कन्वर्ज करेगा, c को भी कन्वर्ज करेगा। तो चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ज करेगा। दिस इज योर सीक्वेंस। नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ये आपको स्पेस दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये उस पे टोपोलॉजी दे रखी है and we need to prove that. Let us first prove that sequence xn converges to b. So what now recall the definition. If we are claiming that sequence xn converges to b, so think of all open sets containing b. टोपोलॉजी दे रखा है, टोपोलॉजी के मेंबर ओपन होते हैं, तो यहाँ b को कंटेन करने वाले कौन कौन ओपन सेट है? देखो एक सिंगलेटन b है, इसके अंदर b है, ab है, bc है और x है। 1 2 3 4 ये 4 ओपन सेट्स हैं जिसके अंदर क्या है जो which are containing b. So look at all open sets in topology which contains b. So those open sets are singleton b, x, a, b and bc. Now as per definition, if you are claiming that, now recall here, we say that xn converges to x, we claim that xn converges to x if for each open set u containing x, if for each neighborhood u of x there is a positive integer n such that xn belongs to u for all n greater than equal to n. For each open set you have to find this n such that the members of sequence lies in u and outside it only finite are there, atmost finite. तो ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे बताओ, देखो कोई भी ओपन सेट उठाओ आप, जैसे मान लो सिंगलेटन बी ही उठा लिया, तो सिंगलेटन ये ले लिया सिंगलेटन बी, दिस वन इज एन ओपन सेट कंटेनिंग बी। कैन यू टेल मी एन नॉट such that for every n greater than equal to n naught members of the sequence xn equal to b lies in this one? Yes, anyone? set 2। पहले ये बताओ कि x1 सिंगलेटन b में है कि नहीं? सीक्वेंस आपका क्या है? x1 भी b है, x2 भी b है, x3 भी b है कि नहीं? x1 b के अंदर है, उसी तरह मैं कह सकता हूं x2 ये भी सिंगलेटन b के अंदर होगा कि नहीं? x2 की वैल्यू तो खुद भी है ना, x2 क्या है? b है, इसके अंदर है। सो आई कैन फॉर दिस आई कैन क्लेम यस n equal to 2 विल आल्सो वर्क। इवन आप n नॉट को 1 ले लोगे तो भी वर्क कर जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। देखो x1 भी b के अंदर है, x2 की वैल्यू भी b के अंदर है, सिंगलेटन b, x3 की वैल्यू भी। सो दिस इज ट्रिवियली ट्रू। n नॉट की वैल्यू 2 ले लो तब भी ट्रू हो। तो आपको कम से कम एक n नॉट क्लेम करना है ना, सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट xn बिलोंग्स टू द ओपन सेट कंटेनिंग b, तो वो भी ट्रू है। बताओ इनमें किसी में फेल कर रहा है? ये तो फुल स्पेस है, तो सीक्वेंस के कोई भी मेंबर, कोई क्योंकि सीक्वेंस के मेंबर टोपोलॉजिकल स्पेस के मेंबर होते हैं, तो वो तो ऑब्वियस है xn n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा। इस ab के अंदर n इक्वल टू 1 ले लो, इसके लिए भी n इक्वल टू 1 वर्क कर जाएगा, इसके लिए भी 1 वर्क कर, क्योंकि b तो इनके से अंदर है, x1 की वैल्यू b वो भी इसके अंदर, x2 की वैल्यू b वो भी इसके अंदर, x3 की वैल्यू b वो भी इसके अंदर, x4 की वैल्यू b वो भी इसके अंदर है ना? फॉर n इक्वल टू 1 will also work for this open set, n इक्वल टू 1 will also work for this open set. So in this way
it is not going to fail anywhere. So thus b is its limit, b इसका लिमिट है। लेकिन सिर्फ b ही लिमिट पॉइंट नहीं, b ही लिमिट नहीं है ना। देखो ये लिखा है b बिलोंग्स टू सिंगलेटन b फॉर एवरी n ग्रेटर देन, तो इस ओपन सेट के लिए मैंने एक n नॉट कह लो कैपिटल n, या ये n नॉट ढूंढ दिया, इसके लिए भी यही वर्क कर जाएगा, है ना। हमें हर एक ओपन सेट के लिए कम से कम एक n नॉट बताना है, हालांकि n नॉट के लिए 2 ले लो तो भी वर्क कर जाएगा। तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज xn कन्वर्जेस टू c, क्या xn c को कन्वर्ज करेगा? सो अगेन यू विल यूज द सेम टेक्निक, लुक एट ऑल ओपन सेट कंटेनिंग c। टोपोलॉजी से पहले वो ओपन सेट बताओ जो c को कंटेन कर रहे हैं। तो ये टोपोलॉजी c को कंटेन कर लो, एक ये b और c वाला ये वाला ओपन सेट है, और एक ये x है, सिर्फ दो ही ओपन सेट है जो c को कंटेन कर रहे हैं। So that I have listed here that there are only two sets x and this set containing element b and c, which are containing c. Now for this, can you tell me a not? One can see that xn belongs to x for every n greater than equal to 1. Is it? अरे भाई सीक्वेंस के मेंबर, ये x1 भी b है, x2 भी b है, इसके अंदर है कि नहीं? x के अंदर तो abc, x है क्या? abc आपका ना, x Yes, क्या sir. है? abc है ना। तो x n की वैल्यू 1 रखो, x1 क्या है? b, b इसके अंदर है, x2 की वैल्यू क्या है? वो भी b है, b फिर इसके अंदर है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, I mean we have shown that for this open set there exists at least one n naught equal to 1 such that for all n greater than equal to n naught xn belongs to x। तो यहाँ भी ट्रू हो गया। अब b और c वाला उठा लो, इसके लिए ये उठा लिया, xn belongs to b c। Can you tell me some n naught? Again 1 will work, n naught को 1 ले लो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं वर्क करेगा। xn के मेंबर्स क्या होंगे? xn आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, b, x n की वैल्यू 1 रखोगे तब भी इसके अंदर b है, x2 की वैल्यू वो भी b है, तो कहीं फेल नहीं कर रहा। सो इट इज आल्सो गोइंग टू कन्वर्ज टू c। एक उसी तरह a का देख लेना। तो अब दिस टेल्स यू दैट इन टोपोलॉजिकल स्पेस अ सीक्वेंस मे कन्वर्ज टू मोर देन वन पॉइंट। हाँ, लेकिन अगर हाउसडॉर्फ है सो द कन्वर्जेंस विल बी यूनिक। सो इफ योर टोपोलॉजिकल स्पेस इज हाउसडॉर्फ स्पेस, then a sequence of point of x converge to at most one point of x। या तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा, and if it converges it will converge to at most one point, है ना। अगर आपका टोपोलॉजी अगर हाउसडॉर्फनेस की भी कंडीशन कर रहा है, so you can take this one as होम असाइनमेंट, प्रूफ एज होम असाइनमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में भी रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, देख लेना, डिस्कस करना है, टाइम नहीं है, मैं डिस्कस। Corresponding to each neighborhood u of x, there is a positive integer and such that xn belongs to u for all n greater than equal to n। ठीक है ना, xn belongs to u for all n greater than equal to n। तो जब भी कन्वर्जेंस की बात करें, वी हैव टू फॉलो दिस डेफिनेशन। हाँ देखो ये क्या, a finite set need not be closed, a finite point set need not be closed, but a finite point set in a Hausdorff topological space is closed। सिर्फ स्पेस लिखने मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस। So every finite point set in a Hausdorff space is closed। So take this to proof as home assignment। इन दोनों प्रूफ को खुद से आप सुनेंगे, इनका लॉजिक मैंने लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऑलरेडी दोनों डिस्कशन करा रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं की पॉइंट्स बता देता हूँ और आप लेक्चर से इसका बेसिक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, मैं कुछ मेन पॉइंट्स और कैसे चेक करेंगे वो एग्जांपल समझा देता हूँ। प्रूफ दोनों प्रूफ, ये दोनों प्रूफ मैंने करा रखा है, दोनों को एक्सप्लेन कर रखा है। So if your topological space is Hausdorff space, then a sequence of point of x converges to at most one point of x। अब देखो मेट्रिक स्पेस और Hausdorff spaces, क्योंकि मेट्रिक स्पेस में क्या है ना, जैसे आपको वहां डिस्टेंस फंक्शन दिया होता, तो जैसे आप दो पॉइंट लोगे x और y, तो डिस्टेंस इनके बीच में मेजर करके हाफ या 1/3 करके मैं हमेशा इनके अराउंड बॉल बना सकता हूँ, which are disjoint। ठीक है, so this is the reason why in metric space whenever a sequence converges it will converge to at most one limit। ठीक है, so in metric spaces convergence limit is always unique, but in topological space it may be unique, it may converge to each of the member। Now if the sequence xn of points of the Hausdorff space x converges to point x of x, we used to write xn converges to x and we say that x is limit of the sequence xn। ठीक है, तो ये दो पॉइंट का। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि एक कभी
चलते हैं वैसा करते हैं कि एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया. Okay, so next class I will start after gap of 5 minutes.